So next topic of our discussion is apiculture. Now apiculture means beekeeping. So here in this topic we are going to discuss the classification of honeybees, types of honeybees and life cycle of honeybee. So first we see the classification. Phylum Arthropoda, class Insecta, order Hymenoptera, family Apidae, and genus Apis. Apis, that means honeybee. So honeybees, these are social insects and live in large colonies. They build combs, this is called comb or hive, with wax secreted as a secretion from the ventral wax gland of the abdomen. The honeybees, they have wax gland in the abdomen region, and that wax is secreted from that ventral wax gland that is used for the construction of this honey comb. The combs are fixed on some supports hanging downwards and are made up hexagonal cells which are joined back to back. The comb serves as a storehouse for honey and cradle for the young ones. तो ये हनी कोम में क्या होता है, इसमें सेल्स होते हैं हेक्सागोनल सेल्स, और हेक्सागोनल सेल्स का उपयोग क्या है, तो इसमें हनी स्टोर करते हैं एंड उसमें लार्वल स्टेजेस होते हैं, ब्रूड होता है. टाइप्स ऑफ हनी बी. सो ये जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक मार्क के लिए पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ हनी बी, दीज आर द फोर इम्पोर्टेंट. एपिस मेलिफेरा, दिस इज कॉल्ड यूरोपियन बी. एपिस डॉर्सेटा, दिस इज बिग बी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक बी. थर्ड, एपिस सिरेना इंडिका, ये है इंडियन बी. एंड फोर्थ, एपिस फ्लोरिया, दिस इज स्मॉल बी. तो ये है एपिस इंडिका, Indian bee, which is widely used in India for beekeeping. This is Apis mellifera, this is European bee, and this is Apis dorsata, big bee, or in Hindi or Marathi it is called agyamo. Size wise, Apis dorsata, this big bee is a very big. Then Apis mellifera is little bit smaller, and Apis serena is much smaller. The first one is Apis mellifera. It is a European bee, generally found in Europe and Italy. The Italian variety is superior and can be domesticated easily. It can produce 25 to 40 kg of honey per year per colony. In her artificial hive, they can produce 25 to 40 kg of honey per year per colony. Apis dorsata, it is called the rock bee. It constructs very large comb on the tall trees, buildings and caves. Honey and wax of these bees are major forest product. They could not be domesticated yet. A large comb may yield 20 to 30 kg of honey at a time. Two crops mature in a year, one in May-June and second one is October-November. These bees are very furious, attacking, very furious. Their nature is furious, attacking nature. Apis serena indica, it is called the Indian bee. It is less furious. It can be domesticated easily. Though the production per comb is less, still it is good for its gentle nature. Gentle nature means not furious, not attacking. This bee is widely used in beekeeping cottage industry in India. It produces good quality 3 to 6 kg honey per colony per year. So this is Apis serena indica. This is hind leg with a pollen basket
This is pollen basket. Here the pollen are stored. That is used for the fertilization, cross fertilization. Apis florea. It is called the little bee. They construct the small comb on branches of trees, bushes and under walls of the buildings. It can be domesticated but does not produce good amount of honey. So this is about the types of honeybees. This is comb, big bee comb, agamo. Then life cycle of honeybee. The honeybees are trimorphic, consisting of queen, drones and workers within a colony. Here in this figure or picture, the queen is shown. This queen is bigger in lengthwise. It is the much bigger. Queen is size is much bigger. Drone and these are workers. All the three castes are shown in this picture. Queen. The queen is 1.5 times larger than worker bees, with shorter wings and elongated pointed abdomen. Pollen collecting and wax secreting structure are absent because queen never go outside from the colony for collection of pollen, or there is no involvement of construction of the hive. It is only a fertile female in the colony. Queen mates with a male. Drone is the male. During nuptial flight, sperms are stored in spermatheca. Queen lays 1500 to 2000 eggs per day. During her lifetime, she lays about 15 lakh eggs. So it is referred as an egg laying machine. The queen mate with the male only once in her lifespan, and that sperms are stored in spermatheca for the entire lifespan, and that sperms are used for fertilization of the eggs. Queen may lay fertilized or unfertilized eggs. Workers are produced from the fertilized eggs and drones are produced from unfertilized eggs. The egg which produces a queen is a normal fertilized egg, but the hatched larva is fed on the special food called royal jelly. Lifespan of queen is 6 to 8 months. मतलब जो लार्वा रॉयल जेली पे फीड करता है, रॉयल जेली, दिस इज ए स्पेशल सिक्रीशन and that secretion is given to only one larva, and that larva becomes the future queen. So those larva or that particular larva which feed on royal jelly will convert it into queen. Okay, this is the colony. This is a queen in the center. She is a queen and all these are surrounded workers. This is a queen chamber. इसके अंदर क्वीन बनने वाला लार्वा इसके अंदर होता है, क्वीन. ये हेक्सागोनल सेल्स हैं. हेक्सागोनल सेल्स, इसमें ये लार्वल स्टेजेस हैं. इसमें हनी एंड लार्वल स्टेजेस होते हैं. इसके अंदर एग्स हैं. दीज आर एग्स. इन ईच सेल ओनली वन एग इज देयर एंड लार्वा. तो the eggs hatches into larva. There are 5 larval instar. Larval development is completed in 7 to 8 days. When larval development is completed, the mouth of the cell is closed up with a wax cap by the other workers of bee. The larvae then converted into pupa. Pupal period of the queen is 15 days, while the pupal period of workers is 20 days. The adult bites away the cap एंड सेल एंड कम्स आउट. मतलब क्या, ये लार्वा सेल के अंदर होते हैं और सेल में 5 इंस्टार लार्वा डेवलपमेंट होते रहती है. कंप्लीट ऑल स्टेजेस कंप्लीशन के लिए 8 दिन लगते हैं. फिर उसके बाद में वो सेल जो होता है उसके ऊपर वैक्स का सिक्रीशन लगा के उसे सील कर देते हैं.
क्योंकि उसके अंदर अब प्यूपा बनने वाला होता है। ये है प्यूपा, ये प्यूपा बनता है और ये प्यूपा धीरे धीरे इस तरह से अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये अडल्ट बी है। पूरा अडल्ट बनने के बाद ये कैप तोड़ के बाहर निकलता है। वर्कर bees they attend the queen. Construction of brood is done by young workers bees, while field work is done by the latter age workers. मतलब जो young recently emerged out bees जो होती हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जो थोड़े से ओल्ड होते हैं वो बाहर फील्ड में वर्क करने जाते हैं नेक्टर और पोलन कलेक्शन करने के लिए। Other duties of the workers include gardening of the comb, air conditioning, the ripening of the nectar to produce honey. Lifespan of the worker bees is 90 days. तो वर्कर बीज के बहुत सारे काम होते हैं, तो ये एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। उनकी इतने सारे काम होते हैं और इतने करेक्ट ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं वो कि दैट इज ए वन ऑफ द वंडर। कैसे काम करते हैं? ये न्यूली इमर्ज जो होते हैं, न्यूली इमर्ज 1 to 3 डेज ओल्ड, वो क्लीनिंग का काम करते हैं। 3 to 6 डेज ओल्ड वाले जो होते हैं अडल्ट, वो फीडिंग करते हैं किसे? तो ओल्डर लार्वी, नर्सिंग का काम करते हैं, नर्सिंग। 6 to 10 डेज जिनको हो गए हैं इमर्ज होके, वो नर्सिंग का ही काम करते हैं, मगर यंग लार्वा को नर्सिंग करते हैं। 8 to 16 डेज जो ओल्ड हो चुके हैं वो फिर वैक्स सिक्रेशन उनका स्टार्ट होता है और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। 14 और 13 डेज ओल्ड अडल्ट क्या करते हैं? तो दे गो आउटसाइड इन द फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन, तो ये फिर बाहर फील्ड वर्क करते हैं। और 30 डेज के बाद में वो नेक्टर एंड पोलन फोरेजिंग, एंट्रेंस गार्डनिंग ऐसे काम करते हैं। Drone bee, drone means male. They are unable to feed himself and is depend on workers for food. The only function of the male is to fertilize virgin female. After nuptial flight, queen returns to hive. The surplus drones are driven out of the hive by the workers. तो मेल, ये ड्रोन मतलब मेल, इसका काम होता है कि क्वीन को फर्टिलाइज करना। ये 5-6 ड्रोन्स होते हैं, उसमें से एक ही ड्रोन फॉर फर्टिलाइजेशन और पॉपुलेशन के लिए आता है, यूज्ड होता है, बाकी सब भगा देते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। स्वार्मिंग, व्हेन द कॉलोनी इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन दे हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेंडिंग आउट ए पार्ट ऑफ कॉलोनी एज ए स्वार्म टू एस्टेब्लिश ए न्यू कॉलोनी एल्सवेयर। One key trigger of the swarming instinct is when the queen has no more room to lay eggs and hive population is becoming very congested. Under this condition, a prime swarm may issue with the queen, resulting in a leaving of old colony with a large number of newly emerged bees. The queen who leaves build herself a new hive with no eggs and no larvae but lots of energetic young bees, who creates a new set of brood combs from scratch in a very short time. इसका मतलब क्या होता है? ये स्वार्मिंग मतलब जब एक कॉलोनी में पॉपुलेशन बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और एग लेइंग करने के लिए क्वीन के लिए कोई चेम्बर बचता ही नहीं है, तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है कि अभी दूसरी कॉलोनी बनाना चाहिए। तो दूसरी कॉलोनी बनाने के लिए पहले जो मदर क्वीन होती है वो एक नई क्वीन तैयार करती है, एग लेइंग करके, रॉयल जेली में फीड करके, और खुद स्वार्म कर जाती है। स्वार्म मतलब खुद जो मदर क्वीन जो है पुरानी वाली ओरिजिनल क्वीन जो है वो निकल जाती है और उसके साथ सब यंग वर्कर्स होते हैं। मदर पुरानी बट वर्कर्स बहुत यंग होते हैं और इसको बोलते हैं स्वार्मिंग। फिर ये जो मदर निकल गई है ये न्यू कॉलोनी एस्टेब्लिश करती है। जो यंग वर्कर बीज होते हैं वो न्यू कॉलोनी बनाते हैं और न्यू कॉलोनी में फिर से एग लेइंग स्टार्ट होता है।
और पुरानी वाली कॉलोनी में न्यू प्रिंसेस जो होती हैं, जो क्वीन बन जाती हैं, वो नई वाली क्वीन पुराने कॉलोनी में ही रहती है. दैट इज कॉल्ड स्वार्मिंग. Before leaving, the workers bees fill their stomach with honey in preparation of the creation of new honeycombs in new home. मतलब निकलने से पहले ये सब हनी पी लेते हैं और अपने पेट में भर देते हैं पूरा हनी, और फिर स्वार्म कर जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता है. वो फिर कंप्लीट काम में लगे रहते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के, तो उनको हनी चाहिए होता है, तो वो निकलने से पहले हनी पी लेते हैं. So this is about the classification, types of honeybees and life cycle of honeybee. So here we stop. Thank you.